अद्य अस्मिन् समये भारत भूमि वैशिष्ट्यं श्रावयामि। कर्तव्ये निरता नरा भारत भुवि विलसन्ति, अस्यां भूमौ देवता जन्मलाभमिच्छन्ति। जन्मलाभमिच्छन्ति न क्लेशः कोऽपि दृश्यते, षडर्थवः क्रीडन्ति हृदयमवलोक्य हृष्यते। कविदीपोऽयं भणति शशिरविचरणे भव्ये, भ्रमतो नीराजना निभा निरते कर्तव्ये। कर्तव्ये निरता नरा भारत भुवि विलसन्ति, अस्यां भूमौ देवता जन्मलाभमिच्छन्ति। अग्रे अहं गर्वस्य अनौचित्यम् उपलक्ष्य एकं कुंडलिया छन्दः प्रस्तौमि। नश्वर संसारे कथय गर्वं कुरुषे कस्य, घन मध्ये चपला निभम धनम यौवनम पश्य। धनम यौवनम पश्य कस्य दासो भूत वित्तम, ध्रुवम मरण मायाति न विस्मरणीयम नित्यम। कविदीपोऽयं भणति सुस्थुरो भवस विचारे, मा गर्वं वह हस्मिन्नति नश्वर संसारे। नश्वर संसारे कथय गर्वं कुरुषे कस्य, घन मध्ये चपला निभम धनम जीवनम पश्य। हिंदी भाषायाः कुंडलिया छन्दस्य वर्षावर्णनं प्रस्तुयेत्। घनशकटेन शुभागमः पृथिव्यां सर्वत्र, बिन्दुहारधारिणि शुभे वर्षे स्वागतमत्र। वर्षे स्वागतमत्र हारितः भूमेस्तापः, हरीति मामवलोक्य हर्षितः कृशकलापः। कविदीपोऽयं भणति स्वागतं तव हृदयेन, विहरति वर्षा गगनमण्डले घनशकटेन। विद्युत्तापकः यत् हीटरः कथ्यते तमुपलक्ष्य प्रस्तूयते। धन्योऽयं हीटरशिखा शिशिरे सुखं ददाति, जराजीर्णकायं कृशं तनुत्राणमिव पाति। तनुत्राणमिव पाति घातेति शिशिरा घातं, कविदीपोऽयं भणति दृष्ट्वा शीतं क्रुद्धमाननं रक्तं जातं। तनुत्राणमिव पाति घातेति शिशिराघातं, दृष्ट्वा शीतं क्रुद्धमाननं रक्तं जातं। कविदीपोऽयं भणति राजते निर्धूमोऽयं, शिशिरे नान्यः सखा हीटरः खलु धन्योऽयं। धन्योऽयं हीटरसखा शिशिरे सुखं ददाति, जराजीर्णकायं कृशं तनुत्राणमिव पाति। विद्युद्व्यजनं प्रति प्रस्तूयते। विद्युद्व्यजनं सुखकरं हरति बलं तापस्य, ग्रीष्मर्तौ सुखदः सखा शोभा प्रतिभवनस्य। शोभा प्रतिभवनस्य सुनृत्यति यथा मयूरः, सुखद समीरैस्ताप सैन्य संहारण शूरः। कविदीपोऽयं भणति हरति तापस्य पीडनं, महती मा विस्कृतिर् दृश्यते विद्युद्व्यजनम्। स्कूटरम् अभिलक्ष्य कथितं। द्विपदोऽयं स्कूटरो, द्विपदोऽयं स्कूटरो धावत्यतिवेगेन, कच्छपचरणः शशकमपि पराजितश्चानेन। पराजितश्चानेन वहति सरसरमिति कृत्वा, यथा समीरश्चलति चालकं पृष्ठे धृत्वा। कविदीपोऽयं भणति प्रियं मे वाहनमेवं, धावति पथ वेगेन प्रियो मे हरि द्विपदोऽयं। द्विचक्रिकाम् उपलक्ष्य कथितं। द्विचक्रिका साइकिल में लोके प्रसिद्धा। तो द्विचक्रिकेयं सुखकरी स्वल्पव्यया विभाति। द्विचक्रिकेयं सुखकरी स्वल्पव्यया विभाति, सा भारं भारं वहति सरला सुखं ददाति। सरला सुखं ददाति निर्धनेभ्यो वरदानं, वायुभोजनं चलति योजनं दूरस्थानं। कविदीपोऽयं भणति भाति
दूषण रहितेयम सकल वाहनम त्यक्त्वा शैव्या द्विचक्रिकेयम द्विचक्रिकेयम सुखकरी स्वल्प व्यया विभाति साभारम भारम वहति सरला सुखम ददाति। दूरभाषा अति सुलभ साधना वर्तते तमुपलक्ष्ये प्रस्तूयते। कृताभिचित्राविष्कृतिर् दूरभाषयन्त्रस्य पर्यङ्कस्थो लभ्यते कुशलं च सर्वस्य मनो में प्राप्य हृष्यते। दूरस्थोपि जनोपि सुनिकटस्थोति दृश्यते। कविदीपोऽयं भणति सदा घंटिका वादिता मनो मोदते दिव्याविष्कृतिर्या कृता। अस्मिन् कुंडलिया छन्दस्य कुशासनस्य निंदा प्रस्तूयते। शृण्वन्तु तावत्। तमश्चालितं शासनं निशापते स्वं पश्य स्वप्नो दर्शयते त्रिकिं समुद्यमं संग्रस्य चौरसंघा दृश्यन्ते लुप्तभास्करः खद्योतास्ते बहुमन्यन्ते। कविदीपोऽयं भणत् उलूकं नभसि राजितं मनः खिद्यते वीक्ष्य शासनं तमश्चालितम्। अग्रे नश्वर जीवनं प्रति अन्योक्तिः प्रस्तूयते। कदली माध्यमेन कदली त्वं किं चालयसि गात्रं गर्वितमेव त्वादृश इह के ते भवन भविष्यन्ति पुनरेव मूलशाखाभिः क्षीणः अहर्निशं चक्रं विलोकयति गजोप्तोदीर्णः। कविदीपोऽयं भणति विचारैरे मूढाधम सखिजन्मने किं गर्वं कुरुषे कदलित्वं किं चालयसि गात्रं गर्वितमेव त्वादृश इह के ते भवन भविष्यन्ति पुनरेव। अस्मिन् कुंडलिया छन्दस्य अन्योक्ति माध्यमेन मधुराशक्तिः प्रति व्यंग्यं क्रियते। संसारे मधुरप्रिये कटुका गुणयुक्ताः तथा द्रियन्ते नहि यथा मधुरा गुणमुक्ताः पश्य निम्बं गुणयुक्तं समाद्रता नहि यथा बदरिका फल गुणमुक्तं। कविदीपोऽयं भणत्यत्र जगति व्यवहारे कटुका गुणयुक्ताः उपेक्षन्ते संसारे। भारत भू गौरवं कथितं श्रेष्ठा सर्गादपि सदा भारत भूमिं पश्य परमोदारा सौखदा सेव्ययं सर्वस्य ब्राह्मणो परावतारः सेव्ययं सर्वस्य ब्रह्मणो धरावतारः पूता ऋषयो भूताः खलु मंत्रद्रष्टारः। कविदीपोऽयं भणति कुरुत सेवया श्रेष्ठां ज्ञात्वा भारत भूमिं खलु स्वर्गादपि श्रेष्ठाम्। अयोध्या महिमा प्रस्तौमि। श्रूयताम्। नगरी अयोध्या सदा सुखदा शुभं ददाति अवताराणां भूर्यं सर्जोजलं विभाति सौख्यदा धर्म रक्षिता रामेण शैशवेत्र मृत्तिका तैव भक्षिता। कविदीपोऽयं भणति मन्यते धर्मधुरीयं पुरीषु सर्वासु श्रेष्ठायोध्या नगरीयम्। ओ नगरीयमयोध्या शुभा सरजूतटे विभाति अवताराणां भूर्यं लोकत्रयं पुनाति परम कल्याण भित्तिका उत्सर्पण रामेण खादितोत्रैव मृत्तिका। कविदीपोऽयं भणति भवाब्धौ बृहत्तरीयं सुरनरमुनि वृन्दैव वन्दिता वरनगरीयम्। नगरीयं योद्धा सदा
नगरी यम योद्धा सदा सुखदा शुभम ददाति अवताराणाम भूरियम सरजू जलम विभाति। अस्मिन् छन्दस्य दुःखपूर्ण संसारस्य चित्रणं कृतमस्ति। संसारे सर्वत्र विपदा अस्ति, महापुरुषाः अवताराः अपि संकटान् चेहे अस्मिन् जगति। तो तदर्थं तदुपलक्ष्य एकं छन्दः प्रस्तुयते। जाता नहि विपदः कुतः कथय जीवने कस्य प्रभञ्जनः प्रतिचालयति शाखां प्रतिवृक्षस्य। जाता नहि विपदः कुतः कथय जीवने कस्य प्रभञ्जनः प्रतिचालयति शाखां प्रतिवृक्षस्य। शाखां प्रतिवृक्षस्य भास्करे ग्रहणं दृष्टं नृपो हरिश्चन्द्रोप्य सहति विक्रीतं कष्टं। कविदीपोऽयं भणति विनीता सीता माता सेहे वन संकटम विपत्तु केषु न जाता। स्वतंत्रोत्सवम उपलक्ष्य एकम छन्दः प्रस्तुयते। स्वतंत्रता दिवसात्र तव देशे स्वागतमत्र जय घोषः सम्पूरितो यत्र तत्र सर्वत्र तिरंगा समुच्छ्रितोऽयं। देशः सकलः हर्ष समुद्रे निमज्जितोऽयं। कविदीपोऽयं भणति भवति सर्वत्र सत्कृता। जीवेत कल्पं यावत् अस्माकं स्वतंत्रता। धूमशकटं यत् प्रेरणित कथ्यते तद उपलक्ष्य एकं छन्दः प्रस्तुयते। प्रत्यक्षं गच्छति यदा लौहपथो गर्वेण धूमयानमवलोक्यते सर्वश्चाश्चर्येण। सर्वश्चाश्चर्येण सर्वश्चाश्चर्येण घोररावः श्रूयन्ते पश्यतोत्कर्णाः पार्श्वभागे दृश्यन्ते। कविदीपोऽयं भणति पश्य पथदारुण दक्षं जनजनार्दनं वहति यथा गरुडः प्रत्यक्षम्। अस्मिन् छन्दसि अन्योक्ति माध्यमेन अनुपयोगी धनिकाः लक्ष्यन्ते। सागर किम गर्जसि वृथा निज सलिलाधिक्येन विस्तृत तटमासाद्यते तृषा शामिताकेन। तृषा शामिताकेन पालिता नक्रव्यालाः संत्रासं वितरन्ति फटाटोपेन करालाः। कविदीपोऽयं भणति कथय किं जलैर्जलाकर तृषातुराणां तृषा सम्यते यदि नहि सागर। सागर किं गर्जसि वृथा सलिलाधिक्येन विस्तृत तटमासाद्यते तृषा शामिताकेन। अस्मिन् छन्दसि अन्योक्ति माध्यमेन चाटुकारिता प्रिय जनान् सावधानीं वर्तेत इति कथितम्। दृष्ट्वा कोलाहलमिदं परितः पक्षिकुलस्य स्वार्थसंगिनस्ते सखे कुर्हि विचारं चास्य। कुर्हि विचारं चास्य यदा ते तोयं नष्टं त्यक्त्वा ते खलु गमिष्यन्ति अन्यत्र सरस्वम्। कविदीपोऽयं भणति मित्र ध्यानं ते कृष्ट्वा स्वार्थसंगिनः खगानिमान् सामयिकान् दृष्ट्वा। चातक व्याजेन याचन वर्जनम कथितमस्ति हिंदी भाषायाः कुंडलिया छन्दसि। मंतव्यं चातक सखे हितकारिणो वचांसि सर्वान् मेघान् वीक्ष्य किं त्वं याचसे पयांसि। त्वं याचसे पयांसि न सर्वे जलप्रदास्ते मेघायन्ते गर्जनेन वै विकथान्नास्ते। कविदीपोऽयं भणति न सर्वं प्रतिगन्तव्यं
मोघायांचा भवति मित्रवचनम मंतव्यम